So in last class, that means yesterday, we have studied about animal kingdom and their basis of classification. And today we will study about some other important features which are usually described for classification, but they are not major ones. So these classification processes or these important features are required for general information. Okay, generally these kind of things like excretory system, respiratory system, appendages, fertilization process, and circulatory system, each of these things are more or less present in every kind of animals. So only the basic structure and basic kind of features are being different. So we will study about these two topics today, that means these few more topics, and then we will study about the phylums. Then we will start about phylum Porifera, our first phylum. So Sana, my first question: have you learned the names of phylum in Yes, serial ma'am. wise? Okay, then start in serial wise manner. You have to tell me the names of phylums. Porifera, Coelum, Porifera, then Porifera, Coelum, Ctenophora, Platyhelminthes, Coelenterata, not coelom, Coelenterata. Okay, then Porifera. मैम स्टार्टिंग से बताएं. Hmm. Porifera, Hmm. Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Helminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and Hemichordata. Yes, and lastly, we will take chordatas. So this is the serial, and I have related to this. I have uploaded a PDF in discussion folder. Go through that PDF every day. मीन्स ये 10 जितने फाइलम है ना, उनका कंपैरिजन पूरा एक साथ एक चार्ट में है. That chart which I have used for my studies, I have uploaded that chart in a PDF form. You go through that chart and study that what are the basic common things that are present in every animal and what are their differences. Means it is very simplest form and very simplest analysis of whole animal kingdom. अगर वो चार्ट याद हो जाएगा ना तुम्हें, तो समझ लो 90% ऑफ योर थिंग्स विल बी क्लियर एंड कवर्ड. उसको याद नहीं करना, उसको बस समझना है. दैट चार्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड what things are there in each and every kind of animal kingdom. Okay, means every kind of phylum. So today we will start the other features, and mostly the other features include what? The other features include, they includes first cephalization. I will explain what is cephalization. Then appendages. Then we will have digestive system. ये दो तरह का होता है, एक complete and incomplete. Then we will see circulatory system, then respiratory system. Respiratory system is found various kinds. Means different kind of animals have different kind of respiratory systems. More or less 6 or 7 type of respiratory system is found in as a whole or animal kingdom. Okay, and then after respiratory, excretory system. Then we can talk about what? Excretory. Okay, skeletal system, then nervous system, endocrine system. See, these kind of system will be present more or less in every kind of animals. Nervous, endocrine. Okay, I think sensory is left. No? Sensory, yes. Sensory. So sensory. If any or more or less इतना ही रहते हैं, कुछ छूटा होगा तो we will add it later. So ये other feature include करते हैं like cephalization, appendages, digestive system, circulatory, respiratory, excretory, skeleton, nervous, endocrine, everything is present in every organism. More or less इनका features different हो सकता है, इनके structure में difference आ सकता है, इनके function में difference आ सकता है, but ये सारी चीजें present ही रहती हैं. Now, what is cephalization? Starting with this only. I'm going to start with cephalization. What is cephalization? Do you know, Sana, what is cephalization? Means what does this term mean? No, ma'am. Okay, yes. So cephalization is an important term with respect to the zygote and embryo formation with respect to blastula, gastrula and later stages. So जब gastrula से anterior part बनता है body का, whenever anterior
part of the body, which includes what? Basically nervous system, sensory systems and head and brain. जब nervous system and sensory system का formation होता है at the anterior part of the body, during when? During gastrulation and body formation. सो जब भी ब्लास्टोपोर से, मतलब गैस्ट्रुलेशन के जो सेल्स होते हैं उसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं, तो जब ब्लास्टोपोर से एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंटीरियर मीन्स अपर साइड, अपर पार्ट ऑफ द बॉडीज आर फॉर्म विच इंक्लूड व्हाट? नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम्स, हेड, ब्रेन. जब ये सारी चीजें फॉर्म होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? सीफेलाइजेशन. ओके, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इंक्लूड्स नर्वस, सेंसरी, head and brain, everything when it is forming, then we call that term is what? Cephalization. Cephalization means what? Formation of anterior, or we can write like this, formation of nervous sensory systems to form head and brain at the anterior end of the body. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीफेलाइजेशन. मीन्स बॉडी के एंटीरियर एंड पे जब नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम टुगेदर मिलके हेड और ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सीफेलाइजेशन. नाउ सीफेलाइजेशन इज सीन इन एवरी एनिमल. सेल एग्रीगेशन वालों को छोड़ के, टिश्यू एग्रीगेशन वालों को छोड़ के जितने भी बाकी हैं हमारे फाइलम्स लाइक प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस एंड then echinodermata, orthopoda, mollusca, everyone will be show, everyone the phylum will show this cephalization. Okay, now second point we can take is second point, what is? Yes, appendages. Now what does this appendages means? See, appendages are that part of the bodies, whether it is in animal or any other phylums, which help in locomotion, sensing the environment, which basically helps the animal to move, to react. Like my fingers are my appendages, my head are appendages. Means body का different parts में divide होना जो locomotion में मदद करे, बोलने में मदद करे, खाने में मदद करे, sense organs like कि इन बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस करने में मदद करे, वो सारे ऑर्गन will come in what? Appendages. Those organs all together are called as appendages. These includes what? Appendages are what? Those parts, let me write this one here, those parts which helps in locomotion, sensing and movement of body. वो क्या कहलाएंगे? Appendages. Example you can see, you can say like mouth, fingers, wings, legs, etc. Many are there. Okay. Now coming to the third point. What is the third point? Digestive system. Means this digestive system, what does it do? We all know कि function of digestive system क्या है? फूड को इंगल्फ करना, फूड के मटेरियल को अब्सॉर्ब करना, उससे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, विटामिन जो भी हैं वो अब्सॉर्ब करना बॉडी में, एंड देन अनवांटेड फूड पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर ले जाना. दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? डाइजेस्टिव सिस्टम. So digestive system is of two kinds in whole animal kingdom. One will be complete, other will be incomplete. Okay, so it is of two kind in whole organism. One will be what? Complete, others will be incomplete. So complete किसका किसका होगा? The first human. Let me write this one in opposite way. Okay? Incomplete and incomplete. क्योंकि incomplete के बाद ही complete का evolution हुआ है. So incomplete digestive system will be shown by the earlier phylums. Okay, starting phylums like उसमें देखो पॉरीफेरा वाले में तो सेल हो, मतलब सिर्फ सेल काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, सो नो डाइजेस्टिव सिस्टम एट ऑल. यहाँ इसका शुरुआत इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत होता है फाइलम सीलेंट्रेटा से. सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थीज, ऑल दीज थ्री फाइलम विल शो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. मीन्स कि उनके पास क्या है? एक ही ओपनिंग है, सिर्फ माउथ. उसी माउथ से खाना अंदर भी जाएगा और उसी माउथ से खाना बाहर भी आएगा. सो उसके जिसके पास एक ओपनिंग है वो इनकम्प्लीट सिस्टम है, एंड जिसके पास दोनों ओपनिंग है, मीन्स दो ओपनिंग मीन्स माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. इनकम्प्लीट वाले में कौन कौन से आ गए एग्जाम्पल में? टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा
and platyhelminthes. And then again complete वाले में कहाँ जाएंगे? Which are having mouth and anus both, from Aschelminthes to chordates. Understood? Now our fourth point. Fourth point will be, as I told, circulatory system. So circulatory system, circulatory system. अब सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है ये कि जो अर्लियर फाइलम्स है अगेन दे विल नॉट हैव देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, और वी कैन से ओपन सर्कुलेटरी, ओपन एंड क्लोज टाइप, टू टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. तो जिनके पास ओपन टाइप है उसमें भी अलग एग्जाम्पल है, जिनके पास क्लोज टाइप है उसका भी क्या है एग्जाम्पल है. सो क्लोज टाइप मोस्टली मोर और लेस जितने फाइलम्स हैं चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, मोर और लेस दे शो दिस क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. प्रिमिटिव फाइलम्स तो दिखाते ही नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम. जो शुरू करते हैं दिखाना उनमें से जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है कुछ में क्लोज्ड है और कुछ में क्या है ओपन है. अब इसमें सीरियल वाइज नहीं है, इसमें एवोल्यूशन का सीरियल नहीं चलेगा. तो इसमें कुछ फाइलम पुराने हैं लेकिन फिर भी क्लोज्ड हैं और कुछ फाइलम नए हैं लेकिन फिर भी ओपन है. तो दो टाइप अगेन, वन विल बी ओपन, अदर विल बी क्लोज. ओपन वाले में देयर आर 5 एंड उसको ऐसे याद रख लो एंथे, THE. ओके, सो ए से क्या हो जाएगा Aschelminthes. एन से दिस वी विल स्टडी लेटर, नॉन सिफेलोपोड्स. ये वर्टिब्रेट्स के क्लास में आएंगे, बट देखो ये Aschelminthes पुराना है और ये नॉन सिफेलोपोड्स नए हैं, लेकिन स्टिल दे आर हैविंग व्हाट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉन सिफेलोपोड्स. Then this one Tunicata also you will study later. Tunicata is a subphylum. Then Hemichordata and last Echinodermata. And closed जितने भी बाकी हैं रेस्ट, चाहे वो Coelentata, Platyhelminthes, Annelida and every other, मीन्स जितने भी कॉर्डेट्स हैं, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, जितने भी बाकी हैं वो किसमें आएंगे क्लोज सिस्टम में. ओपन ये सिर्फ यही 5 शो करते हैं, बाकी एवरी phylum and every organism show this closed one. Now fifth one is what? Circulatory system, respiratory system. This is very interesting. Respiratory system, respiratory system. Most important point and most important question which has been asked in respiratory system is what? कि फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ इवॉल्व हुआ था या किस फाइलम में रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम शो हुआ था. सो ऑर्थोपोड्स या फाइलम ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोड्स, or we can say phylum Orthopoda shows respiration या respiratory system for the first time. जिसका भी पहली बार कहाँ इवोल्यूशन हुआ था वो हमेशा याद रखना. So this one is important. Now respiratory system के types means they are of various kinds. किसी किसी में क्या है प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इवोल्यूशन ये ऑर्थोपोड का है, ये लाइन याद रखना. बाकी रेस्पिरेशन तो सेल सरफेस के थ्रू भी होता है, मॉइस्ट सरफेस के थ्रू भी होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू भी होता है. तो प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्थोपोड. नाउ इसका टाइप, इसमें बॉडी सरफेस के थ्रू भी रेस्पिरेशन देखा गया है. बॉडी सरफेस से कौन करेगा? जिसके पास सिर्फ सेलुलर लेवल है. देन गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है सना? फिशेस. यस, लंग्स के थ्रू. देन देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम ऑर्थोपोड्स में ही पाए जाते हैं. बुक लंग्स और बुक गिल्स कहते हैं उसको. बुक लंग्स एंड बुक गिल्स मीन्स उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो एक के ऊपर एक होते हैं, तो उसको किताब के जैसा बोला गया. दैट इज व्हाई दे आर बीन सेड एज बुक लंग्स और बुक गिल्स. ट्रैकियल सिस्टम, देन we can say buccopharyngeal system. Buccopharyngeal system is only found in frogs. Buccopharyngeal system. How many are there? Body surface, gills, lungs, book gills, tracheal system, buccopharyngeal system. Yes. So is any other is there? Let me remember. Okay, one more is there. I think cutaneous respiration. So these much kind I think is there which are present in whole animal kingdom. जितने भी animal kingdom है इनसे ज्यादा respiration का कोई उनके मतलब फीचर्स नहीं है. रेस्पिरेशन का इतना ही टाइप दिखेगा एंड दैट टू आर इन फाउंड इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स.
सी बुक लंग्स एंड बुक गिल्स ऑर्थोपोड्स ही शो करते हैं, सम ऑर्थोपोड्स स्ट्रक्चरल सिस्टम भी शो करते हैं। इसमें ये बक्कोफेरेंजियल सिस्टम इज ओनली शोन बाय फ्रॉग्स। देन क्यूटेनियस respiration is shown by some we can say vertebrates and some other frogs, no, not frog, some other kind of reptiles are there which respire through their skin. Okay, so this one will come in cutaneous respiration. Then lungs से human beings and जो animals हैं, mammals हैं, mostly वो lungs से respiration लेते हैं. Gills से mostly fishes respire through gills. And body surface से body surface will come include porifera, coelenterata, ctenophora, जिसके पास cell and tissue level system है, वो body surface से respiration लेते हैं. Okay, examples we will see in the slide. अभी के लिए याद रख लो कि कौन किससे कितना रेस्पिरेशन हो रहा है. रेस्पिरेशन के वेरियस काइंड्स हैं, मोस्टली 7, और इन्हीं 7 रेस्पिरेशन काइंड से बहुत सारे जितने भी एनिमल किंगडम है वो, यानी कि जितने भी एनिमल ऑर्गेनिज्म है रेस्पिरेशन लेते हैं. नेक्स्ट 6th one, what is the 6th one? Respiration, yes, excretory system. So excretory system is very simple. Excretory system. Now जब एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जिसके पास एक ही माउथ ही है, जिसके पास एनएस प्रेजेंट ही नहीं है, सो हाउ विल दे शो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम? सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये तीनों में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है. क्यों एब्सेंट है? बिकॉज पोरिफेरा इज हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हर एक सेल अपना अपना खुद का रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन परफॉर्म करता है. सो दे डोंट हैव दिस प्रॉपर सिस्टम. And then coelenterata and ctenophora, they are having tissue levels. Division तो है लेकिन proper division नहीं है. That is why they are having only one system, entry system mouth का, जो भी properly function नहीं करता है. तो उसका भी क्या है? Their unwanted material are released into water by their tissues only. Okay, so no excretory system is present. Their excretory system we can say is done by general body surface, यानी कि उनके बॉडी से ही डायरेक्टली वाटर में रिलीज हो जाता है. देन वर्टिब्रेट्स में क्या है? किडनीज आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स फॉर एक्सक्रीशन. सो लेट मी राइट आल्सो पॉइंट इज व्हाट एब्सेंट इन पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. इन तीनों में ही एब्सेंट है, बट एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू व्हाट? जनरल बॉडी सरफेस. एक्सक्रीशन occurs through general body surface. And vertebrates में क्या है? In vertebrates kidneys are there. Okay, now कौन कौन से तरह का एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आता है, दैट मीन्स कौन कौन से टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसके बेसिस पे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे, वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है. एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज. 5 डिफरेंट कैटेगरी जैसे बेस्ड ऑन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. सो बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज, कितने तरह में? 5. One will be aminotelic, then second amonotelic, third will be ureotelic, fourth will be uricotelic. So only 4 will be there. I thought 5 are there. So 4. So aminotelic means कि जिसका excretory product अमोनिया होगा, अरे अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड. Then amonotelic means excretory product will be ammonia. Then ureotelic means excretory product will be urea, and uricotelic means excretory product will be uric acid. Amino acid will be done by some kind of fishes also, and ammonia will be also including some fishes and some kind of amphibians. Then ureotelic will include higher animals and mammalia. Uricotelic is being shown by some reptiles and some birds. Okay, now coming back to excretory system is completed. Then what is given? Skeletal system. So what is the number? 6, 7. Skeletal. Excuse me, ma'am. Yes, Sana. Ma'am, uric acid कौन produce करता है? Birds and reptiles. If you have seen their wastages, like black solid mass of substances like ऐसे वैसे रहता है ना, तो वो basically उसको टेस्ट करता है तो उसमें यूरिक एसिड का अमाउंट रहता है. ओके, सो स्केलेटल सिस्टम.
See, whole animal kingdom is divided into two kind of skeletal system: exoskeleton and endoskeleton. Okay, exoskeleton and endoskeleton. एक्सोस्केलेटन मीन्स कि बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटर कवरिंग है, एंड इंडोस्केलेटन मीन्स कि देयर इज अनदर कवरिंग, अनदर होल ऑर्गेनिज्म दैट इज फॉर्म इनसाइड द मेन वन. ओके, सो एक्सोस्केलेटन सिर्फ एक कवरिंग है, एंड इंडोस्केलेटन मीन्स कि बॉडी के अंदर भी एक हार्ड शेली मटेरियल डेवलप होता है. सो एक्सोस्केलेटन इज मेनली शोन बाय frogs, fishes, and endoskeleton. From the slide also I will show. So it will include what? Frogs, fishes, mammals, and many more are there. Okay. And endoskeleton means they will include reptiles, birds. Endoskeleton, like reptiles and birds, they give birth to what? An egg. An egg is what? Hard calcareous shells. So ये कहाँ फॉर्म हो रहा है? उन लोग के बॉडी के अंदर. सो जब भी हार्ड कैलकेरियस शेल्स या स्ट्रक्चर या स्केलेटल सिस्टम्स जो बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है, देखो कुछ मैमल्स यहाँ पे भी आएंगे, लाइक हेन एंड जो भी मैमल्स एग प्रोड्यूस करते हैं, प्लैटिपस एंड हेन्स, सो उसमें भी आएंगे. तो जो अपने बॉडी के अंदर कोई हार्ड कैलकेरियस शेल्स रखता है उनको इंडोस्केलेटन में रखा जाएगा, एंड जो भी एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर कोई हार्ड स्केलेटल शेल्स नहीं रखता है, दे विल कम इन व्हाट? एक्सोस्केलेटन. ओके, नेक्स्ट विल बी व्हाट? नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन एवरी एनिमल, मींस लिटरली एवरी एनिमल्स फ्रॉम पॉरीफेरा टिल मैमथ्स. हर किसी में नर्वस सिस्टम मींस अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने का process present है, whether it is porifera, whether it is vertebrata, whether it is any mammals. So every organism is having nervous system, and there is no division कि primitive nervous system है या advanced nervous system है. Nervous system means nervous system. Every organism has respond to stimuli. Every organism has sensory organs in it. Every organism know what is about their environment or what is outside their body. Okay. So every organism have stimuli to respond to their outside environment. Next will be what? Nervous system, sensory system, and endocrine. Okay, these are very small topics. Sensory system, like I have explained just now कि जैसे नर्वस सिस्टम में हर एक चीज प्रेजेंट है हर ऑर्गेनिज्म में, सेम वे सेंसरी सिस्टम भी हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. किसी में टेंटाकल्स हैं तो किसी में पूरा नर्वस सिस्टम है, किसी में पूरा ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है. हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सेंसरी सिस्टम है. सम हैज टेंटाकल्स, सम हैज विंग्स, some has brain, but every organism is having sensory system. Now the last one is what? I just forgot. Sensory endocrine one. So these three, you can say every organism is having these three, and there is no exception mostly. Endocrine system. So endocrine system will be possessed by each and every animal kingdom. मीन्स सबका अपना अपना तरीका है ग्लैंड्स, डक्ट्स रिलीज करने का, सिस्टम रिलीज करने का फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ देयर बॉडी. ओके, सो एवरी ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ वी विल कम टू द स्लाइड. इस पूरे पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम? दीज 10 पॉइंट्स मोर और लेस एक दो आगे पीछे हो जाएंगे अभी. इज देयर एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग cephalization, appendages and everything? No, ma'am. Okay, so we will come to the slide. Other important features, cephalization. It is concentration of sense organ, nervous system at the anterior part of the body during embryonic stage to form the head or brain. So nervous system और sensory systems का formation होता है कहाँ पे? Anterior end of the body. किसके लिए? To form head and brain. See in the figure also, ये क्या हो रहा है? नर्वस सिस्टम और जितने सेंसरी सिस्टम है वो हेड और ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए एंटीरियर पार्ट में ही जा रहे हैं. देन अपेंडेजेस क्या है? प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. व्हाट? लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड, सेंसेशन एक्सेट्रा. ये अपेंडेजेस क्या क्या हो सकते हैं? विंग्स, फिन्स, लिम्स, टेंटाकल्स, पैरापोडिया. पैरापोडिया इज अ लेग लाइक मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स, सीटा एक्सेट्रा. सीटा इज शोन बाय सम काइंड ऑफ इंसेक्ट्स. Then digestive system, digestive tract passes through with food is taken in for digestion, absorption and egestion. सबको पता है खाना लेना, उसको absorb करना और उसके unwanted material बाहर निकालना, ये पूरा काम कौन करता है? Digestive system.
सो इसके पास क्या है, सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ इंजेक्शन एंड इजेक्शन, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेलमेंथिस। एंड जिसके पास दोनों ओपनिंग है वो क्या हो जाएगा, एस्केलमेंथिस एंड कॉर्डेट्स। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, बहुत सारे वेज में डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट है। So tiny aquatic animals like amoeba, hydra, etc. They respire through what? Body surface. ये hydra is an example of coelenterata, and amoeba is what? It is a kind of we can say pre phylum porifera से पहले what we have studied, animal kingdom से पहले what we have studied. This will come into kingdom protozoa. Phylum kingdom fungi से पहले हमने क्या पढ़ा था? What we have studied? Kingdom Monera, Kingdom Protista. So amoeba will come into Kingdom Protista. Amoeba is what? Member of Kingdom Protista. But as I have already told, कि Protista is what? Connecting link between fungi, plantae and animalia. So जो Protista से अर्लियर वाले एनिमल्स फॉर्म हुए थे, मतलब प्रोटिस्टा से जो एनिमल्स फॉर्म होना शुरू हुए थे, दीज अमीबा विल कम इनटू प्रोटोजोआ. ट्रू क्या है, ये अमीबा का ट्रू क्लासिफिकेशन अभी क्या है, प्रोटोजोआ. ये लोग प्रोटोजोआ में आते हैं, और प्रोटोजोआ आर द फर्स्ट प्रिमिटिव एनिमल्स. प्रोटोजोआ को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स, जो कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंटेन किए हैं. देन ये लोग कैसे अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से. देन लार्जर एक्वेटिक एनिमल्स जिसके पास गिल्स होता है, लाइक फिशेस, प्रॉन्स एंड मसल्स. Muscles are included in phylum Mollusca. Land animals respire through lungs. Pulmonary respiration बोलते हैं इसको, like frog, snails, lizard, birds. See, frog एक ऐसा एनिमल है जिसके पास 3 तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इट कैन रेस्पायर थ्रू लंग्स, इट कैन रेस्पायर थ्रू बक्कोफेरेंजियल कैविटी, एंड इट कैन ऑल्सो रेस्पायर थ्रू स्किन, यानी इट इज हैविंग मॉइस्ट स्किन. सो ये तीनों तरह का शो करेगा रेस्पिरेशन. Then insects have tracheal respiration which occur through trachea. Trachea is what? Intercommunicating tube through which gases exchange occur. अभी जब हम लोग लेटर में आगे phylums में पढ़ेंगे, then I'll explain in detail what trachea is. Okay? Animals like earthworm, leech, frog, etc. They act as respiratory surface. इनका skin है क्या है? Respiratory surface है. ऐसे respiration को हम लोग क्या बोलते हैं? Cutaneous respiration. Then scorpions have book lungs and king crabs are having book gills. Means जो एक गिल्स ऐसे फॉर्म होता है ना, एक गिल्स ऐसे हैं, तो they will be having one over the other gills like structure. Like book का जो पेज होता है, 1 by the 1 2 3 4 5 6 layers like this. So उनका जो गिल्स का स्ट्रक्चर होता है ना, if you are able to see, yes. So जैसे ये बुक का 1 2 3 4 5 लाइनिंग दिख रहा है ना, सेम वे उनके गिल्स में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर प्लेस्ड रहते हैं. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग बुक लंग्स और बुक गिल्स. उनका प्लेसिंग बहुत बुक के शीट के तरह होता है. देन इन फ्रॉग गैसेस एक्सचेंज ऑल्सो अकर थ्रू द लाइनिंग ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी. मीन्स जो उनके माउथ के नीचे एक कैविटी है, उसको हम लोग बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी, एंड दैट कैविटी इज ऑल्सो हेल्पफुल इन व्हाट, रेस्पिरेशन. इन फ्रॉग्स ओनली. Then circulatory system is what? Circulatory system is responsible for transport of materials in the body. Of course, we know this much. Then it consists of fluid, blood vessels, and a heart. If blood flows in spaces and sinuses without proper boundaries, the circulatory system is open. Example में Aschelminthes, non-cephalopods, tunicata, hemichordata and echinodermata. Means जो हमारे में veins and venulets हैं, कैपिलरीज हैं, अगर वो सब नहीं प्रेजेंट है और विदाउट वेन्स एंड कैपिलरीज ब्लड फ्लो हो रहा है, तो दैट काइंड ऑफ ब्लड फ्लोइंग इज कॉल्ड एज ओपन वन. एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज व्हेन ब्लड फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल्स. जिसपे आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट है और उसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. Then in insects such as prawn and pila, blood is colorless that contains hemocyanin, copper containing pigment. Colorless ना, यहाँ पे रहना चाहिए blue color, not colorless. अभी जब तुम डिटेल पढ़ोगी ना फाइलम्स में, प्रॉन एंड पाइला, तो उन लोगों के पास अलग से, लाइक फेमसली वी नो कि ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर होता है. क्यों? बिकॉज उनके ब्लड में कॉपर पिगमेंट रहता है और कॉपर का कलर ब्लू होता है. दैट इज व्हाई दे हैव ब्लू कलर. सो सेम वे वर्टिब्रेट्स में क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का कलर क्या है, रेड कलर है. आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, सो आयरन का कलर रेड है, दैट इज व्हाई हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है. ओके, सो ये फर्स्ट स्लाइड. देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन?
this excretory system. It is involved in removal of nitrogenous wastage product from the body of an organism with the help of excretory organ. The excretion occurs in different ways. अब कैसे कैसे होता है, जिसमें एब्सेंट है उसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड टिश्यू लेवल में है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा लाइक, ठीक। उसमें हर सेल पार्टिसिपेट करता है एक्सक्रीशन को, क्योंकि हर सेल अपना अपना पूरा पूरा काम करता है. जस्ट 1 minute से ना. सो वेयर वाज आई? Excretory system. Yes. So in animals like sponges, all the cells are in contact with water. Excretion occurs by general body surface. I have explained this one कि हर सेल अपना अलग अलग काम करेगा, मीन्स हर सेल का कॉन्टैक्ट वाटर बॉडी से है, तो वो लोग डायरेक्टली वाटर बॉडी में अपना एक्सक्रीशन यानी कि अनवांटेड मटेरियल रिलीज कर देते हैं. इनवर्टिब्रेट्स, किडनीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. Now, based on excretory products, animals can be classified into 4 categories. कौन सी कैटेगरी? Aminotelic, amonotelic, uricotelic and ureotelic. So, जिसमें अमीनो एसिड है वो कौन सा है? Starfish, unio. Means the starfish is member of Echinodermata. Unio is a member of what? Mollusca. Then ammonia किसका है? Most invertebrates and some mollusks. Ureotelic. Ureotelic means urea, cartilaginous fishes, snail, prawn, mammals, aquatic reptiles, ये सब. And last में uricotelic में कौन से? Insect, terrestrial crustaceans, lizard, snakes, birds, etc. Now nervous system, aggregation of nerve cells or neuron that help in coordinating. See, इसमें कोई exception ही नहीं, क्योंकि every organism of animals possess this nervous system. Same here, endocrine system में ductless gland होते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंड वर्टिब्रेट्स एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, मतलब सब में है. वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स भी इंक्लूड है. देन सेंसरी सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन जो स्टिमुलस पिकअप करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन तक या नर्वस सिस्टम तक, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बताने में. सो कौन से होगा? एंटीना, टैक्टाइल एंड स्मेल, टेंटाकल्स, स्किन, स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग के लिए, ईयर हियरिंग के लिए, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम स्मेल के लिए, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, आईज होती हैं, लैटरल आई ऑर्गन्स होती हैं. सो बहुत सारी चीजें हैं लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टेंटाकल्स, सेंसरी नर्वस सिस्टम्स एक्सेट्रा. देन स्केलेटल सिस्टम, it is hard and internal or external framework that provides support and shape of the to the body. Some animals are devoid of skeletal system, means soft bodied होते हैं. कौन से? Platyhelminthes, Ashkelminthes, Annelids. उनके पास soft body होता है, they don't have this skeletal system. Then they can be following type. कौन से? Exoskeleton और endoskeleton. It is hard supporting and protective framework present on exterior of the body, means body के बाहर की तरफ. Made up of non-living matter, external shells of mollusks, cuticles of arthropod, scales of fishes and reptiles, feathers of birds, hair, hoofs, nails, horns, claws of mammals. Like these nails we are having. So ये क्या है? एक तरह का exoskeleton है. Then endoskeleton, hard supporting framework which is present in interior of the body. And invertebrates, basically sponges, it is made of calcareous or siliceous spicuous. जब sponges पढ़ाएंगे ना तो उसमें we will see that how and where these calcareous spicules are present. Okay. Now, invertebrates, it is all the animals with external fertilization and with many internal composite hard living tissues of cartilaginous and bones. Fertilization such as reptiles and birds lay eggs. Their endoskeleton supports the whole body of an organism. See, exoskeleton और endoskeleton का एक बेस्ट एग्जांपल आई हैव टेकन. ये फ्रॉग का जो बॉडी है, इसके अंदर भी देखो सम काइंड ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. लाइक our body, if we take whole rib system is present, so that rib system is what? Endoskeleton. Okay. And endoskeleton के बाहर जो हमारा स्किन सिस्टम है, यानी कि जो हमारा हाथ पैर पूरा बॉडी स्केलेटन, वो क्या है? एक्सोस्केलेटन. एंड सेम वे ये देखो, ये जो विंग्स है ना, दैट विंग्स इज एक्सोस्केलेटन. इन दिस वन वेयर कॉकरोच में क्या है? उसका जो विंग्स है वही क्या है? एक्सोस्केलेटन की तरह एक्ट कर रहा है. ओके. So I think that is it for today's class. In the next class, I will teach you about what? This phylum Porifera. Non-chordata is having some other features. This sex, reproduction, and fertilization. Okay, we should take this one also. It is very short. So I told you na that I must have left some point here. Other important points in this one.
endocrine sensory. So this will be sex fertilization and more or less. So yes, coming back to this slide, animals generally have sex organ to reproduce every sexual matters. So examples में क्या है? Mammals, both male and female sex organ found in same individual. ये कहाँ है? Hermaphrodite है या bisexual या monoecious है? See, this type of question I think we have discussed. Plants में mostly monoecious use होता है, but animals का जब बात होगा तो mostly we use hermaphrodite. Okay, give me a minute. नहीं हो रहा. Okay, leave it. It's not working anymore, I think. So where were we? Sex. So hermaphrodite animals include liver, fluke, tapeworm, earthworm, leech, etc. Means इनके body में male और female organ एक ही body के अंदर present होते हैं. The animals with either female or male sex organ is known as unisexual or dioecious. Example में frog, lizard, birds, dog, etc. Male and female can be distinguished on the basis of external feature. The condition is called sexual dimorphism. Example lion and lioness, man and woman, peacock and peahen, etc. अब देखो इसमें तीन तरह का कैरेक्टर है, एक hermaphrodite और bisexual, एक क्या है यूनिसेक्सुअल और डाइशियस, एंड तीसरा क्या है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. मतलब कि एक्सटर्नली ही तुम बता सको कि कौन मेल है कौन फीमेल है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. एंड जिसका इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोल रहे हैं hermaphrodite और bisexual. एंड जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है, मींस है तो एक ही लेकिन उसी ऑर्गेनिज्म में किसी किसी में मेल प्रेजेंट है, किसी किसी में फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिसेक्सुअल या डाइसेक्सुअल. ओके, नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कैन बी ईदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल. वी नो दिस पार्ट. So asexual is does not involve fusion of gamete. It is found in lower animals like sponges, coelentrates, annelids and platyhelminthes. Common methods are budding, fission, fragmentation and regeneration. यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट. प्लैटीहेलमिंथेस के ग्रुप में प्लेनेरिया इज एन ऑर्गेनिज्म. उसका कितना भी डिवीजन कर दो, मतलब अगर उसका एक ये बॉडी पार्ट है तो इतना भी डिवीजन कर दो, हर बॉडी पार्ट मींस ईच बॉडी पार्ट विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. एंड इसके पास क्या है? ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन. लिजार्ड इज अ फेमस एग्जांपल दैट वी कैन सी इन आवर ओन होम. कि लिजार्ड का कभी कभी देखोगे नहीं, टेल लेस लिजार्ड्स रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स व्हेन यू ऑब्जर्व उनका टेल डेवलप हो जाता है. तो दिस इज व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ asexual reproduction. Then sexual reproduction, of course, it will include what? Formation and fusion of gametes. Then male gametes called sperms and female gametes are called ova, जो कि non motile होती हैं. Then fertilization, external and internal. External fertilization will be included by many invertebrates and some marine fishes. Most amphibians shed both eggs and sperms into the water where fertilization and development occur. This is called external fertilization. Means जो फिशेज और एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं वो अपना एग और ओवम दोनों ही वाटर बॉडी में रिलीज करते हैं और उस वाटर बॉडी में ही दोनों का फ्यूजन होता है. एंड सी वाटर बॉडी है तो सर्वाइवल का चांसेस बहुत लेस होता है, बट एट द सेम टाइम वो लोग एक ओवम या एक मेल नहीं मतलब एक स्पर्म नहीं रिलीज करते. दे रिलीज देयर ओवम एंड स्पर्म्स इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स. तो जब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में करते हैं तो उनका जो एग फॉर्मेशन होता है वो भी क्या होता है? वेरी लार्ज अमाउंट में एग का फ्यूजन और फॉर्मेशन होता है. ठीक. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन लैंड एंड सम एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक जो मैमल्स एक्वेटिक हैं लाइक व्हेल्स, डॉल्फिन, ये सब. स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेल into the reproductive tract of female during copulation. This is called internal fertilization. Like देखो फीचर्स फिगर में भी वी कैन से कि जो मेल एंड फीमेल है दे आर रिलीजिंग देयर वाटर मींस रिलीजिंग देयर एग एंड स्पर्म इनटू वेयर इनटू वाटर. इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. लेकिन इंटरनली क्या होता है? जो मेल सेक्स ऑर्गन अपना स्पर्म फीमेल सेक्स ऑर्गन को इंटरनली ट्रांसफर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनली मींस इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नाउ लास्ट 3-4 lines. Non-chordata, the animals which include about 35 phyla, out of which 11 are considered as major phyla. Animals can be classified into two major groups on the basis of presence or absence of notochord. Notochord को कल हमने क्या पढ़ा था? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, और वी कैन से मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर. सो जिसके पास ये है वो
कॉर्डेट्स में आते हैं, जिसके पास ये नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। अब टोटल क्या है, 35 फाइला हैं नॉन कॉर्डेट्स के, बट हम लोग कितना पढ़ते हैं मेजर, 11 फाइला। ओके, देन नॉन कॉर्डेटा एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड कॉर्डेटा presence of notochord. They can be classified on the basis or absence of vertebral column also, means backbone. किसके पास backbone है, किसके पास नहीं है, तो जिसके पास backbone है वो vertebrates है, जिसके पास backbone नहीं है वो invertebrates है। Okay, I think we have completed today's target. From next class I will start this phylum Polyphera. So today we have learned the basic or other important characteristics which include respiratory, digestive and other circulatory systems, sex, fertilization, what are the basic features जो कि हर animals में common है। Okay, so these are some 11 or 12 points. Now from the next class we will study this phylum Polyphera. Okay, ये दोनों क्लास आज का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये इन्हीं दोनों क्लासेस में हैं। बाकी ये फाइलम पॉलीफेरा आई विल जस्ट एक्सप्लेन थ्रू द स्लाइड कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कहाँ सिमेट्री है, कहाँ नोटोकॉर्ड है, कहाँ नहीं है। आई विल टेक दीज कैरेक्टरिस्टिक इनटू मींस सीरियल वाइज यही कैरेक्टरिस्टिक लेके पढ़ना है कि किस बॉडी में क्या है, किसी में एक्स्ट्रा होगा किसी में नहीं होगा। ओके